हाँ, तो स्टूडेंट्स जुड़ते जाएंगे। चलिए, तो हम लोगों ने स्टडी किया था पिछले क्लास में, क्लास 10th में फिजिक्स और ऑप्टिक्स चल रहा था, या के चैप्टर का नाम था लाइट। और उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ मिरर का स्टडी किया था। पार्ट्स ऑफ मिरर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मिरर क्या है, तो मिरर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। फिर अब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ मिरर में पार्ट्स ऑफ मिरर सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था पोल के बारे में। क्या? द मिडिल पॉइंट ऑफ ए मिरर कॉल्ड इट्स पोल। पहले एपिसोड को देख सकते हैं, आपका एपिसोड 3rd है। तो द मिडिल पॉइंट ऑफ ए मिरर कॉल्ड पोल, दिस इज द कॉन्केव मिरर। इसके डेफिनेशन को समझने के लिए आप इसके ठीक एपिसोड 2 को देख सकते हैं। और ये जो है, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। Point of the mirror called its pole. The middle point of the mirror called its pole. And हम लोगों ने फिर क्या देखा था? देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Already we know that a mirror is the part of a sphere, and there is a center of the spherical, a center of the sphere. So center of curvature of a mirror, center of curvature of a mirror is the center of that sphere by which it made. So already we study about it. तो कोई भी जो मिरर होता है, जैसे कि ये कॉन्केव मिरर है, तो ये मिरर किसी न किसी जो है होलो स्फीयर से बना है ग्लास के, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। यही सेंटर इस मिरर का जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और ये इसका मिडिल पॉइंट तो पोल हो ही गया। तो स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss about principal axis and already we study. लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। अब ये मान लेते हैं कॉन्केव मिरर, और इसका मिडिल पॉइंट पोल, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन joining pole and center of curvature of a mirror called principal axis. तो ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने देख ही लिया था ऑलरेडी। तो now we'll discuss about focus. Now we will discuss about focus. के पहले हम लोग देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर is denoted by a small r. And what is this? The imaginary straight line called its principal axis, middle point of the mirror called pole, and let here is its center of curvature. So the distance between pole and center of curvature of a mirror called radius of curvature. कोई भी जो मिरर है उसका मिडिल पॉइंट जो पोल है, उससे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, वो क्या है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इफ यू कंसीडर अबाउट ए कन्वेक्स मिरर, देन द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज पोल, एंड दिस इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड
radius of curvature. So we can define it the distance between pole and center of curvature of a mirror called of curvature, radius of curvature. The distance between pole and center of curvature of a mirror called radius of curvature of that mirror. यहाँ कर सकते हैं of that mirror. The distance between pole and center of curvature of a mirror is the radius of curvature of a mirror. Now we will define focus. What is focus? तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देखेंगे जब इसके बारे में। ये आपका कॉनकेव जो है ये मिरर हो गया और इसका मिडिल पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, पोल हो गया। कॉनकेव मिरर का मिडिल पॉइंट पोल, और ये इसका मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नियर अबाउट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस रे को अगर हम लोग यहाँ से लाई कराते हैं इस मिरर पे, तो ये क्या होगा, इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कटेगा, ये कहलाएगा इसका फोकस। तो यहाँ जो है, यहाँ इंसिडेंस रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंस रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर मिलती है। ठीक है, कैन वी डिफाइन इट? We can define it that the incidence rays, that means incoming rays, incidence rays parallel to principal axis passing through a point of a principal axis after reflection through mirror called its focus. Incidence ray parallel to principal axis passing through a point of principal axis after reflecting through mirror called its focus. Or we can say that all incidence rays passing parallel to principal axis but at a point of principal axis after reflection through mirror called its focus. तो यहाँ जो है, जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर रियल में यहाँ क्रॉस कर रही हैं, इसलिए इसका फोकस क्या होगा, तो रियल होगा। ठीक है, now if we consider about convex mirror, then it means this is its middle point and this is its center of curvature. The incidence ray parallel to principal axis appears passing through a point at principal axis called its focus. Or you can say that all incidence ray parallel to principal axis appear to cut at a point of principal axis after reflecting through a convex mirror called its focus. तो ये रियल में जो रेज हैं वे कट नहीं कर रही हैं, वर्चुअली हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, अपैरेंट हो जाएगा। ठीक है,
So how can we define the definition of focus? We can define that incidence rays, incidence rays parallel to principal axis, parallel to principal axis, चलो दिख रहा है, parallel to principal axis cut at a point of principal axis और appears so, या ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट से कट कर रही है, कब? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर called its focus. So incidence rays parallel to principal axis cut at a point of principal axis or appear so after reflection through mirror called its focus. So the all incidence rays cutting at a point of principal axis after reflection through mirror called its focus. तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये कोई कनकेव मिरर है और यहाँ इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक टर्च जो है, टर्च जलाते हैं और उसका जो ये लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, ये सभी इंसिडेंस रे जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पे ये कट करती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? फोकस करते हैं। तो इस पोजीशन में ये फोकस तो रियल हो गया और ये फोकस क्या हो गया? वर्चुअल हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज फोकल लेंथ? व्हाट इज फोकल लेंथ? So focal length is denoted by a small f and it is the distance between pole and focus of a mirror. Pole and focus of a mirror. The distance between P and F is denoted by a small f and called focus. So focal length is the distance between focus and the distance between focus and pole of a mirror, pole of a mirror called its focal length. That means we can show by the figure that already you know that the middle point of the mirror is pole and the center of the sphere by which the mirror is made called center of curvature, and the focus of the mirror is to be exactly situated between the pole and the focus, pole and the center of curvature of the mirror. Now the distance between the focus and the pole called focal length denoted by a small f, and this is convex mirror. Convex mirror P, F and C. The distance between P and F called its focal length, and already you and center of curvature is denoted by R. Denoted by R. So these are the parts of a mirror. These are the parts of a mirror. So students, now we study about required conditions for image formation. Required conditions for image formation. Now we take some diagrams to form image of an object.
अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है, मिरर पी एफ सी, पी एफ एंड सी, पी एफ एंड सी, P, F and C. Now from the definition of focus already we know that the incidence ray parallel to principal axis passing through focus after reflection to the mirror. कोई भी जो इंसिडेंस रे है वो जो रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, उसके बाद वो कहां से मूव करेगी, फोकस से। और फिर इसका अपोजिट सेंस लेते हैं कि अगर कोई रे जो है वो फोकस के डायरेक्शन से आ रही है तो वो पैरेलल मूव करेगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, या इधर फोकस से होके जाएगी तो यहाँ ऐसे पैरेलल मूव करेगी। तो ये हो गया फोकस के डेफिनेशन से कि किसी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आने वाला जो इंसिडेंस रे है वो फोकस से होके मूव करता है। तो इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस and just its opposite if the incidence ray passing through focus, then it will reflect in the direction of principal axis in the same opposite. And again, from the law of reflection already we know that the angle of incidence is to be angle of reflection. ये angle of incidence क्या है? तो ये आप इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, एक्सिस को नॉर्मल बोल सकते हैं। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि अगर ये प्लेन मिरर है और कोई इंसिडेंस रे इस पे 90 डिग्री का एंगल बना के इंसिडेंट हो रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल कौन है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना दे वो क्या है, नॉर्मल है। तो अगर कोई सर्किल है और उस सर्किल का कोई सेंटर है तो सेंटर से जो हो के कोई भी स्ट्रेट लाइन मूव करेगी तो वो रेडियस का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, रेडियस का। एवरी स्ट्रेट लाइन passing through center we call its radius, and if we take a tangential line at perimeter of the circle then it forms angle of 90 degree. अगर कोई भी टेंजेंशियल लाइन, स्पर्श रेखा हम लोग इसको लेते हैं तो रेडियस उससे कितना का एंगल इंक्लाइन करता है, तो 90 डिग्री का। कितना का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यानी simply we can say that radius makes angle of 90 degree at its surface. So already the principal axis is passing through the center of the sphere by which the mirror is made. So the line C is normal. This is normal at the surface. So this called normal. And already we know that the angle between incidence ray and the normal is angle of incidence, and the angle between reflected ray and the normal is angle of reflection. So this is the law of reflection. And again, if incidence ray coming through the center of curvature, then it will move in the same direction. Why? Because it is normal at the, so it will return in the same direction. अगर कोई जो इंसिडेंस रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है तो वो सेम डायरेक्शन में रिटर्न करेगी
क्योंकि वो सरफेस पे कितना का एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाला फोकस से होके जाने वाला पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना के जाएगा उतना एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगा, और सी से जो मूव करेगा रे वो सीधे सी के डायरेक्शन में वो रिटर्न होगा। अब इसका यूज करके हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। Now the new topic will be image formation. Image formation in concave mirror. F and C. कोई ऑब्जेक्ट ये इस मिरर से काफी डिस्टेंस पे है तो उसको इंफिनिटी पे कहा जाए। If an object is situated at very large distance from the mirror, then the object called situated at infinity. तो अगर ये ऑब्जेक्ट सी के आउटसाइड में है, थोड़ा इसके करीब है, तो उसको कहा जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सी और इंफिनिटी के बीच में है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं क्या कि if the object is situated between C and infinity, then if the object is situated between C and infinity, object is situated between C and infinity, object is situated between C and infinity, object is situated between C and infinity. So now already we know that the incidence ray parallel to principal axis will passing through focus after reflecting to the mirror, and the ray passing through C, incidence ray coming through C, will return in the same direction. The point where the rays will cross will form image of the object. If the name of the object is AB, then name of its image will be A dash B dash. So now we see that the rays are cutting in real. Really the rays are cutting. So the image is real and smaller than the object. ऑब्जेक्ट से ये स्मॉलर है और रियल है और सी और एफ के बीच में है। रियल इमेज का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा इनवर्स होगा, वो इरेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो लेंस हो या मिरर। तो जब भी जो रियल इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट जो होगा उसके रिस्पेक्ट में हमेशा इनवर्स होगा, उल्टा होगा। नाउ द इमेज वी कैन फॉर्म बाय द अदर वे। This is the incidence ray coming parallel to the principal axis will pass through focus, which is passing through the focus will reflect parallel to the principal axis and ray will cut between C and F and the image will made here. The name of image is A dash B dash of the object AB. So the same image can be represented by the way, and again
Plate array is going by the way and reflects in the direction. The angle of incidence will be the angle of reflection, and the ray passing through C will return in the same direction, and the image will form between the C and F. So again, we can represent it as the rays parallel, the rays passing through C will return in the same direction, and the incidence ray passing through focus will reflect parallel to the principal axis, and the ray will cut between the C and F center, between center of curvature and focus. So if the object is situated between C center of curvature and infinity, then we can represent made image of the object by the concave mirror may be represented by any way, A, B, C, D, किसी के द्वारा भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई C और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है C पे ही आ गया, इधर की ओर आ गया, तो if the object is situated at C, if the object is situated at C, then its image will be real, equal in size of the object, and will make at the same point. That means will make at center of curvature. If the C is center of curvature and object lie at the center of curvature, then the ray, incidence ray, passing parallel to the principal axis will return in the direction of focus. We can represent as the incidence ray passing through focus will return parallel. चला देते आप, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे P, F, C, अगर C पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल जाने वाला जो है फोकस है, और फिर इसके पैरेलल एक पॉइंट देंगे और वहां पे फोकस से रे को लाएंगे और उसको पैरेलल भेज देंगे, तो एक बार में ही आपका क्लियर इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सी का सी पे ही बन जाएगा, साइज होगा ऑब्जेक्ट के बराबर ही, लेकिन रियल होगा, रियल यानी इन्वर्टेड बैंड ऑब्जेक्ट। यू कैन मेक द सेम इमेज बाय द वे PFC. Here the object is situated at point C. So now take the length and a point. The incidence ray making angle of incidence I will reflect at the same angle of reflection R. Now we take a point parallel at the mirror. Incidence ray coming through focus will lie at the point, and it will reflect in the parallel direction of the principal axis, and inverted image equal in size of the object will form here. If the name of object is AB, then the name of the image will be A dash, B dash. By the way, we can also form the image of the object situated at C. If the object is situated at C, then we can form an image. First one passing through focus, and जब ये रिफ्लेक्ट होता है मिरर से तो ये फोकस से होकर रिटर्न होगा, और
एक कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के जाएगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कोई भी इमेज ए बी सी कोई भी इसके लिए बना सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सी, अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, तो इमेज विल बी रियल, एंड real means inverted, inverted means real, real and equal in size of the object, size of the object। अब देखेंगे कि अब ये इधर मूव कर रहा है तो उसका इमेज कैसे बनेगा। Object is situated between C and F, between center of curvature and focus. This is middle point, pole, focus and center of curvature. The object is situated at C, between C and F. Then the incidence ray parallel to principal axis will pass through focus, and a ray passing incidence ray passing through focus will reflect parallel to the principal axis, and the larger real image will form between the C and infinity. This is the object and this is the image. Image will be real, larger than object between C and infinity। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है C और F के बीच में तो इसका इमेज यहाँ बन गया। We can form the same image by the other way. This is the concave mirror. The middle point of the mirror is pole. This is its focus, and this is center of curvature. If object is situated between C and F, then the ray passing through focus will the ray incidence ray parallel to principal axis will pass through focus, and the ray which will incident at an angle of incidence will reflect at the same angle of reflection, and तो और भी इसको कैसे बना सकते हैं। How can form the image of the object by the other way if it is situated between focus and C? Then we can say that one ray is going from incidence rays by the way, and फोकस से तो ये चलेगा, तो ये बनेगा C और इंफिनिटी के बीच में। तो ऐसे इमेज हम लोग बना सकते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में आगे कैसे कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तब तक आप इसका एक्सरसाइज करते रहें।